Good morning, class 7. Before this, we studied about depletion of water. Now we are going to see management of water, how the water is managed and supplied to our houses. Before that, we'll discuss about the map, rain map of India. One map is given here and it is about the rainfall in centimeters. So you can see here, rainfall in centimeters. Dark blue shows above 400 centimeter rainfall. Light blue shows 200 to 400 centimeter rainfall. Then this blue shows 100 to 200 centimeter rainfall. In this way the colors become light and the rainfall decreases. Means for 60 to 100, 40 to 60, 20 to 40 and 0 to 20. So by these colors we can identify the areas having high rainfall and the lowest rainfall. So you can see this area, Bhutan, Bangladesh, this area shows a dark blue means high rainfall. And here 100 to 200 rainfall in centimeters. Again you can see many areas is given here. So this area shows 100 to 200 centimeter rainfall means what? Again see this area shows 40 to 60 rainfall centimeter. Then by the colors you can identify how much rainfall is falling in this area from 0 to 400 centimeter rainfall is shown in this map. So this area shows that how much centimeter of rainfall is there every year. So by this we can identify so which area gets high rainfall and which area gets low rainfall. Now next we'll see the management. So in class 6 we studied how the municipality provides water by a well-planned pipe system. When the civic authorities supplies water through pipe, not all of it may reach द डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक वो पहुँचता नहीं है. यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ water gushing out of the pipe. Means what happened? From the starting the water pipes are attached and fixed till our house, but in between what happens, some leakage or some damage of pipe occurs and many of water get waste. So this is told that you might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipe. It is responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. So the whose duty is that? To look after the pipes or the leakage of the pipes. The civics, it is the responsibility of the civic authorities. The civic authority, their responsibility is to prevent the wastage of precious water. So this is called mismanagement. Mismanagement or wastage may take place at the level of individual also. All of us knowingly and unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. So leaking tap is another source of huge water wastage. So this is also mismanagement or wastage done by us also and the civic management also. So our duty is to don't waste water in a high amount. Then leaking taps is another source of huge water waste. We waste water as though we do not need water the next time. So we are wasting much of water without any use. We have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away. This is waste of precious natural resource. So again the rainwater also wasting at the time of rainfall. So this is also one type of precious waste that is done by natural resource. The rainwater can be used to recharge
the groundwater. This is referred to as water harvesting. So water harvesting you studied in sixth also. How to save water of rainfall by making tanks from the roof. The pipeline should be there, and at the ground we should dig one or make one sunk tank, and in that we can fill the water which is wasting by rain. So this is called water harvesting. Again it is called rainwater harvesting. Means whatever the water which is coming by rain, we can save that water, and that is called rainwater harvesting, about which you learnt in sixth also. Find out if the building in your neighbor have water harvesting system installed. We have at many places in India and each own practice of water storage and water recharge like the Bowries. Bowries means like a well. Like a well, it is called the Bowries. So in that also we can store water store which is falling by rain. Bowri was the traditional way of connecting water. Ancient time, in the own practice, the Bowris were there, and in that Bowris the water was stored for the use of many activities. Traditionally, way of connecting water. With time, the Bowris fell into disuse and garbage. So, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो जो बाउरिस थे उसमें लोग कचरा डालने लगे और उसको कचरे में मतलब डस्टबिन के जैसा यूज़ करने लगे, और वो बाउरिस का जो हुआ डिसयूज़ मतलब उसका यूज़ अच्छे से नहीं हुआ, उसमें पानी स्टोर नहीं किया गया, उसमें कचरा डाला गया, गार्बेज ऑन दिस थिंग्स वर पुट इन दिस बाउरिस. However, because of the acute water storage, people in this area have had to rethink. फिर क्या हुआ कि बावरिश तो चले गए, then they have to rethink, means अब ये पानी कैसे स्टोर करना है वो सोचने लग गए. The बावरिश are being revived, उनको वापस से सुधारना शुरू कर दिया. Today the situation is that in spite of scanty rain, these places are managing their water needs well. सो अभी उन्होंने क्या किया, वो बावरिस को सुधारा और वो एरिया में क्या हुआ, फिर से वाटर स्टोरेज शुरू कर दिया. एंड बाय स्टोरिंग द वाटर इन द बावरिस दे कैन नाउ यूज दैट वाटर इन अ वेन नीड्स. अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली. मे बी यू हैव हर्ड ऑफ ड्रिप इरीगेशन. ड्रिप इरीगेशन आपने सुना होगा. ड्रिप इरीगेशन मतलब कि कम से कम पानी यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर को बाय making some pipelines. Drip irrigation is a technique of watering plants by making use of narrow tubing which deliver water directly at the base of the plant. तो इसमें क्या होता है ड्रिप इरिगेशन में कि एक पाइप लाइन के थ्रू हर एक प्लांट में होल किया जाता है, और हो जो पानी पाइप लाइन से आएगा वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, प्लांट में चला जाएगा. अदर एरिया विल नॉट बी getting the water, only the plant area will get the water, and that is called drip irrigation. और ये पानी सीधा प्लांट के बेस में चला जाता है, यहाँ वहाँ नहीं फैलता है. Then next we'll see what role you can play. What role you can play. So see, how you ever shown, have you ever shown concern इफ़ यू सॉ अ टैप लीकिंग इन योर हाउस. आपने कुछ किया है अगर टैप लीकिंग हो रहा है हाउस में या स्कूल में. लीकिंग टैप वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर. टैप से जो लीक होता है उसमें से ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. यू मस्ट मेक एफर्ट टू स्टॉप दिस लीकेज. आपने कुछ एफर्ट बनाना चाहिए या कुछ तरीका या कुछ करना चाहिए कि ये लीकेज स्टॉप हो जाए. देयर आर अ नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few example add on. So some example दिया है कि ये टैप वाटर कैसे बंद कर सकते और वेस्ट नहीं होने दे सकते. वाटर वाइज हैबिट्स. टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग. जब आप ब्रश करते हो टैप को बंद कर देना है.
मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। धोने, जो हम वॉशिंग करते हैं फ्लोर को, उसको वॉश नहीं करना है, मॉप मतलब पोछे से पोछ देना है, इससे पानी बचेगा। नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स। सो वाटर का इफेक्ट क्या है? स्कैरसिटी मतलब कम से कम पानी होता है ऑन प्लांट्स। यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स विंटिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इन दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। जो पॉट्स होते घर पे, गमले, उसमें क्या होता है कि पानी अगर नहीं देते हम तो वो सूखा हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए उसमें पानी नहीं डाला तो वो ड्राई हो जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन दिस चैप्टर नंबर 1 दैट प्लांट नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट को हम वाटर क्यों करते हैं? बिकॉज टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर, ऑल्सो फ्रॉम